Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear all of my students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is sewing machine, its attachments and their functions. आपने इनके जो attachments के जो parts वो आपने देखे हैं. आज next parts को देखते हैं. आज का जो next part है वो है zipper foot. It is a footer used for attaching mainly zippers and snap tape. Zipper foot has a narrow toe foot which gives more precision and visibility. The foot needs to be adjusted to right or left to stitch both sides of the zip. This foot also attaches decorative cording and piping. There are two kinds of zip foot attachment, one which an adjustable foot, the other with a non-adjustable foot. जो ये जिपर फुट होता है, इट इज़ ए फुटर यूजर फॉर अटैचिंग मेनली जिपर्स एंड स्नैप टेप्स. ये जिपर फुट जो होता है आमतौर पर जिप और स्नैप टेप को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है. जिपर फुट में एक नैरो टो होता है जो जिप या स्नैप टेप की सिलाई को विजिबिलिटी को बढ़ाता है. जो इसका फुट होता है यानी जो जिपर फुट का फुट होता है वो जिप को दोनों तरफ यानी राइट और लेफ्ट को एडजस्ट करता है, जिससे यानी जिप पर सिलाई आसान होती है. ये जिपर फुट जो होता है डेकोरेटिव कॉर्डिंग और पाइपिंग यानी सजावटी डोरी और पाइपिंग को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके दो किस्म होते हैं. जिपर फुट के दो किस्म होते हैं, एक को हम एडजस्टेबल फुट और दूसरे को हम नॉन एडजस्टेबल फुट कहते हैं. नेक्स्ट है इलास्टिक फुट. It helps in attaching elastic to the fabric and provides even tension every time to avoid pulling and tugging on the needle. जो इलास्टिक फुट होता है, इलास्टिक फुट की मदद से हम इलास्टिक को आसानी के साथ कपड़ों पर लगा सकते हैं. इसकी मदद से हम इलास्टिक को पकड़े रहने और खींचाव के साथ रखते हैं और हमें इलास्टिक पर सिलाई करना आसान हो जाता है. नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी फुट. एम्ब्रॉयडरी फुट जो होता है, इट इज़ suitable for shearing fabric. It designs allow the elastic thread to pass easily under the pressure foot on sewing machine. The elastic is coached onto the fabric. The thread is fed through the pressure foot hole and pulled gently. The more it is pulled, the more the fabric gathers on a straight stitch machine. The elastic is wound around the bobbin. जो ये इलास्टिक होता है, इलास्टिक फुट की मदद से हम इलास्टिक फुट एम्ब्रॉयडरी फुट, इट इज़ suitable for shearing fabric. It designs the allow. जो एम्ब्रॉयडरी फुट होता है, एम्ब्रॉयडरी फुट की मदद से हम कपड़ों पर शीरिंग यानी तार दूजी करते हैं. इस अटैचमेंट के डिज़ाइन से हम इलास्टिक थ्रेड को आसानी के साथ प्रेशर फुट के नीचे गुजार सकते हैं. इस अटैचमेंट की मदद से हम इलास्टिक को अच्छी तरह से कपड़ों में सिलाई मशीन के ज़रिए छुपा सकते हैं. जो ये एम्ब्रॉयडरी का धागा होता है, इसको प्रेशर फुट होल के ज़रिए आसानी के साथ खींचते हैं. जितना धागा हम ज़्यादा खींचते हैं उतना ही ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है. स्ट्रेट स्टिच मशीन में हम जो ये स्ट्रेट स्टिच मशीन होता है इसमें हम इलास्टिक धागे को बॉबिन पर वाउंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है ओवरलॉक फुट. Overlock foot. It is useful for producing a durable finish on seams which fray easily or are bulky. It is suitable for use on a sewing machine and is most effective when the fabric is positioned under the pressure foot so that the stitches from slightly or the fabric edge. A metal bar holds the edge in place to make sure that the stitches are set correctly. This tests that you have the correct positioning and stitch width before you start to sew. Fig 1.31 shows the attachment overlock foot.
it can be attached to the sewing machine. جو اوور لاک فٹ ہوتا ہے اس سے ہم بہت ہی اچھی فنشنگ ٹانکوں پر کر سکتے ہیں جو آسانی کے ساتھ بڑے اور موٹے کپڑوں پر کرتے ہیں. یہ اوور لاک فٹ جو ہوتا ہے زیادہ تر سیونگ مشین میں استعمال ہوتا ہے. اوور لاک فٹ زیادہ تر سیونگ مشین میں استعمال ہوتا ہے اور اس اٹیچمنٹ کی مدد سے ہم کپڑوں کے آستین ایجز کی سٹچ کو پریشر فٹ کے نیچے لگا سکتے ہیں. یہ پریشر فٹ کے نیچے ہوتا ہے. جو یہ اوور لاک فٹ ہوتا ہے یہ پریشر فٹ کے نیچے ہوتا ہے. یہ اس وقت زیادہ مؤثر رہتا ہے جب کپڑا پریشر فٹ کے نیچے ہوتا ہے اور اس اٹیچمنٹ کی مدد سے ہم کپڑوں کے آستین یعنی ایجز کی سٹچ کو عمدہ بنا سکتے ہیں. ایک میٹل بار کو کپڑے کی ایج کو ہولڈ پر رکھا جاتا ہے اور پھر اوور لاک سلائی کو اچھی طرح کر سکتے ہیں. اس اوور لاک فٹ کو ہم سیونگ مشین میں لگا سکتے ہیں. پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہی اور اس کے ساتھ یونٹ فرسٹ کا سیکنڈ سیشن کمپلیٹ ہوا. اب ہم سیشن تھرڈ کو اٹھائیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ اور اس کے نوٹس بھی بھیجیں گے. اللہ حافظ.